Today we're gonna review this famous Indian chef Ranveer Brar Indian style egg fried rice. Let's see how it differ from Uncle Roger's style fried rice. है एकदम झकास जाबाज एग फ्राइड राइस कटेगा और इसमें से सॉस निकले. He making some sort of omurice style fried rice, but instead of just egg pouring down like regular omurice, he put some sort of curry in it. Is this Indian egg fried rice gonna be good? और ये जो भी अध्याय हैं इनकी सब्जी पहले काटनी चाहिए. मैं आपको बारी बारी वही चीज़ बोलता हूँ कि इंडियन चाइनीज़ खाने में कटिंग चॉपिंग का काम पहले करके ख़त्म हो जाना चाहिए. Yeah. No shit. चॉपिंग का काम पहले करके ख़त्म हो जाना चाहिए. Of course you need to chop first. That's the most obvious thing. What are you gonna say next? Oh, before cooking, remember, you have to go buy ingredient from shop. क्या करना ना, कभी भी फ्राइड राइस बनाएं तो सब्जी काटें चावल के दाने की तरह. चाइनीज़ खाने में कट्स जो हैं वो मैच Correct. क्योंकि अगर कट्स एक साइज़ के होंगे तो चीज़ एक साथ पकेगी. तो गलती सब्जी की और नूडल की नहीं है, गलती उसकी है जिसके हाथ में छुरी थी. ठीक है. Don't stare at me like that. Uncle Roger feel he gonna chop me next? कैबेज को काटने का तरीका मैं पहले भी Cabbage, correct. 1/4 करें. Uncle Roger know I always say vegetable tastes like sad. But remember, this Indian style fried rice, not Uncle Roger style, and cabbage very commonly used. So that okay, we respect tradition. देखिए कैबेज बहुत ज़रूरी है. ये इंडियन चाइनीज़ खाने में जो बंद गोभी को बड़ा स्मार्टली यूज़ किया है ना, बल्क देने के लिए. खर्चा बचाओ, चावल महंगा है, गोभी सस्ती है. Correct. Indian Chinese food start out as street food. So all ingredients they use super cheap. You chop cabbage, add into rice, make the whole fried rice look bigger. But Chef Ranveer, now you're cooking at home. No need to use cabbage to increase volume. Don't cheap out on your wife and kid. Hiya. ये जो इंडियन चाइनीज़ खाने की स्मार्टनेस है ना, मतलब एक तरफ जो चॉपिंग है Green bell pepper, okay. और जो Again, Uncle Roger won't use this in my fried rice, but Indian Chinese, that okay. राइस की चॉपिंग में है कैबेज, ग्रीन Onion, okay. कैरेट. ठीक है. उसके बाद Green bean, correct. और हरा प्याज दोनों के लिए कॉमन रहेगा. तो आप अगर सोच रहे होंगे रणवीर क्या लगा हुआ है, बता तो रहा नहीं है कुछ, तो उसका मतलब जो है वो What this spinning around for? Spin for what? Uncle Roger don't need to see 360 wheel of bean. आप हर बार मेरी बात नहीं सुनते, फिर आप मेरे को मैसेज करते हैं. Ginger, correct. मजा नहीं आया. Very common ingredient in Indian food. अगर आप नहीं पालना चाहते तो जिंजर, हरी मिर्च और धनिया में कंजूस Garlic, of course. ना करें. सब्जियों की कटिंग आपने देख ली. मैंने छोटे से छोटा काटने की कोशिश की है जितना बीन्स को बाइट के लिए. Indian people don't use rice cooker. यहाँ पर The whole country, they cook rice like this because they like cooking rice on hot mode. Uncle Roger know Indian people. You guys amazing at making rice. So it's okay if you don't use rice cooker. But trust Uncle Roger, just get rice cooker. It's gonna change your life, free up your stove, and let machine cook for you. बासमती है, आप सेला बासमती भी यूज. Basmati rice, correct? चावल को Classic Indian rice. बॉईल कर लेना है. ठीक है. But niece and nephew, if you can get jasmine rice, just use jasmine. It's the king of rice. You know jasmine rice the best because people name their kid Jasmine. Nobody named their kid Basmati or sushi or brown. नमक बहुत इंपॉर्टेंट है. Salt it okay. Oil not needed. रोटी बनाए तो. देखिए जब भी मैं इंडियन चाइनीज़ खाने की बात करता हूँ तो मैं टैंगरा या अचीपुर की बात ज़रूर करता हूँ, बिकॉज ये कहानी शुरू वहीं से हुई. 1850 में जब चाइनीज़ मूल के निवासी पहली बार भारत आए चीनी की मिल खोलने के लिए. Okay. Uncle Roger just want to see the fried rice. We're gonna skip this History Channel bullshit. चावल को रोरिंग बॉयल पे लेके आए. रोरिंग बॉयल मतलब एकदम खौलते पानी में उसको बाउंस करने दें. उसके बाद फिर गैस को धीमा कर दें. देखिए थोड़ा सा तेल डालने का क्या फायदा होता है. चावल Okay, rice look okay. देखिए कितने नाजुक हाथ से चला रहा हूँ. अब इस चावल को ध्यान से देख लीजिए. आपका फ्राइड राइस का चावल इतना पका होना चाहिए, इतना खिला. Spin move again. Hiya. अब ज्यादा छेड़छाड़ किए बगैर इसको डाल Put in fridge, correct? के लिए तब तक हमारे पास 1.5 घंटे वाला चिल्ड राइस पड़ा हुआ है. ठीक है. हाँ, हम झूठ नहीं बोलते, बेईमानी करते हैं चौड़े में. I will cheat, but I won't lie to you. That's the most fuckboy shit Uncle Roger ever hear. Is this cooking show or Love Island? This guy just trying to get the was? एग फ्राइड राइस कायदे से बननी चाहिए. Don't necessarily need to be white. सफेद नहीं बनना. Depend how much seasoning you के want. अंदर हल्का सा सोया सॉस, सेजवान सॉस वगैरह डाल सकते हैं,
लेकिन कायदे से सफेद Garlic, correct. क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी उसके साथ Ginger go in, good. ग्रेवी देना पसंद करेंगे तो इसलिए Carrot. हम Uncle Roger don't like sweetness in my fried rice, but it's okay for Indian style. Cabbage go in, good, good. सॉल्ट, Salt, good. हल्की सी शक्कर. Sugar, no. Don't need sugar. Why you want sweetness in fried rice? You want sweet, go eat dessert. Okay, but at least it's just half teaspoon. And judging by how much ingredient in there, I think you can't even taste it. कैबेज को जलने में मदद करेगी. Cabbage can char by itself. You don't need sugar. टेस्ट आएगा. नाइस. बेसिकली क्या है कि बस पानी छुड़वाना है. Okay, हल्का सा कलर आना चाहिए. look good. ग्रीन चिली थोड़ी सी डाल देते. Green chili, correct? हल्का सा सिरका. Uncle Roger usually don't put vinegar, but Indian fried rice, vinegar, okay. तो हम क्या करेंगे, हम अंडा डायरेक्टली इसके अंदर डाल के इसको चला देंगे. और एक तीसरा फार्मूला भी है वो ये. Okay. Now you're putting the egg. अंडे डालते जाइए, मिक्स करते जाइए. मुझे ऐसे ज्यादा अच्छा. Egg going good. अगर आप ऐसे डालेंगे तो अंडे का फायदा क्या है, वो मॉइस्ट रहे. Walao, 3 egg. I thought you want to save money. You're using cabbage to make the rice look more voluminous to save money. But now you just high roller. 3 egg. You want to save money or you want to spend money? Hiya, you tell Uncle Roger. Uncle Roger cooked fried rice. I only use 1 egg, but he used 3 egg. He egg fuckboy also. Remember, he will cheat, but he won't lie to you. चावल के साथ में मॉइस्ट रहना चाहिए अंडा, लेकिन चावल डालने के पहले अंडा डालना है, चावल डालने के बाद अंडा नहीं. Correct. फिर तो आपको समझ नहीं आएगा क्या बन गया. मतलब अंडा भुर्जी बन गई, चावल बन गया, मतलब कुछ और ही बन जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं. I feel like he's staring into my soul again. चावल आए, थोड़ा सब्जी आए, इसलिए अंडे को पहले सेट होने दीजिए. अच्छे फ्राइड राइस में Huh. French bean now only go in? I think French bean need to go in earlier. Because if French bean undercooked, it got very raw, grassy taste. Nobody like it. Small mistake. अच्छे फ्राइड राइस में जितना सब्जी Okay, rice going good. उतना ही चावल. केयरफुली फोल्ड करना है, चावल नहीं तोड़ना. देखिए अंडा वंडा सवाल Ratio of rice to ingredient look okay. कि हमने अंडे की बेइज्जती नहीं करी. ये है जी लाइट सोया सॉस. Soy sauce good. लाइट, हाँ. अभी ये व्हाइट पेपर White pepper, nice for you. बस लाइटली प्यार मोहब्बत से फोल्ड कर लेना है. अजीनोमोटो बच्चों के लिए अच्छा नहीं. What? तो अगर बच्चे खाएंगे फ्राइड राइस तो अजीनोमोटो Ajinomoto is MSG. बाकी Amazing for everyone. इतना अच्छा नहीं होता. बड़ों के लिए होता है या नहीं होता. मेमोरी लॉस होता है, कुछ What? लोग कहते हैं. Memory loss? Hiya, why you giving fake news, Chef Ranweer? MSG don't cause memory loss. Trust me, Uncle Roger been eating MSG my whole life. I still remember my bitch ex-wife Auntie Helen. And memory loss, not always bad thing. Some of us need it. Who need therapy? We can just forget your trauma. हो चुका है कि बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं Wrong. MSG good for kid. Remember what Uncle Roger said many years ago. You just get a baby, put MSG on baby. It'll be better baby, smarter. Uncle Roger looked so young and innocent back then. Can't believe it's been 5 years now since that video. You all been with me this whole journey. और गर्भवती महिलाओं के लिए अजीनोमोटो ज्यादा अच्छा नहीं होता. इसलिए Spring onion good. अजीनोमोटो चाइनीज खाने में अवॉइड करें. जहाँ White sesame seed. I think that's just him trying to be fancy. That a bit weird. तक हो गया फ्राइड राइस रेडी. लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती. फ्राइड राइस बगैर सॉस के क्या फायदा. तो एक बढ़िया सा सॉस और उसका एक एग पार्सल बनेगा. See, this is the biggest difference. To Uncle Roger, that egg fried rice ready to be served, but this Indian style fried rice. And when Indian people eating rice, they always need to have curry. That's why Chef Ranweer gonna make sauce for them. इसमें हम डालेंगे Okay, you're making a simple curry. Vinegar, soy sauce, चप, ग्रीन ketchup, green chili. Okay, fine. चिकन स्टॉक या पानी This Chinese Indian fusion curry. के लिए शुगर, फिर सारी सब्जी डाल Saute everything. Bring the flavor out. गार्लिक. और अब इसको इंडियन तड़का नहीं मारना है, बस हल्का सा स्वेट करना है एंड वी आर रेडी. कॉर्नस्टार्च से इसको गाढ़ा कर दिया हमने. Cornstarch correct. है, But Chef Ranweer, now the fried rice getting cold now. Hiya. You should prepare this curry before you make fried rice. अब ये देखिए दोनों चीजें रेडी हैं. ठीक है, हमारी एग फ्राइड राइस रेडी है. और Okay, look good, look good. अगली कारस्तानी करने के लिए Okay, एक, this is the omurice part. दो Mix together. के अंदर डालें थोड़ा सा पानी. Water. Why? Why you add water? That's so weird. Uncle Roger never seen this before eggs mixture and you add water. Why? थोड़ा
सा धनिया Salt okay, coriander okay. और इसको विस्क. Water, very weird. पार्ट इम्पोर्ट. अंडे में भी तेल है, पैन में भी आपने तेल डाल दिया. अब एक पतला सा अंडे का Uncle Roger think he adding water, so the layer of egg get thinner. Look at this. Look how thin that layer of egg is. के बीच से थोड़ा मोटा हो, साइड से पतला हो. पानी हमने डाला अंडे को पतला करने के लिए. Yeah, this is not easy, niece and nephew. So if you want to try this at home, good luck. तो हम इतना पतला ही बनाएंगे वरना फिर हम खेलेंगे ही नहीं. वो भी नहीं है. अंडा पक गया. चाहे तो हल्का सा टेढ़ा कर लें उसको. ध्यान से करें, पता लगा अंडा ही गैस के ऊपर गिर गया और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं. ठीक है ना. ये I feel like he's just trying to show off. ये आपका पतला सा ऑमलेट रेडी हो गया. This egg so thin, it look like it on Ozempic. देखिए पीछे से आवाज़ आई है कि जो खाना बनाना जानता है वही बना सकता है. ये कारीगरी स्पेशल है, कुछ खास लोग ही कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो है ना ये वाला This one he's gonna put the gravy, the curry in there. पोटली बनानी है सॉस की. ये गया सॉस. इसको सब तरफ से. Okay, this very cool technique, but got one big problem. The only way this can work, the curry and egg both need to be cold. Otherwise, you can't lift it with your hand. So when you're serving to people, it's just cold curry on cold egg on cold rice. Hiya, that colder than Auntie Esther's shoulder. Nobody want that. Very creative. I give you that. But little bit style over substance. ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा. आपके सामने टीवी पे पहली Yeah, I think he's just doing that for TV. कलर. ये सॉस की पोटली को बड़े ध्यान से उठा के चावल के ऊपर. See, nothing steaming anymore. It's taking too long. आपने ऐसी The कुछ curry not hot. No steam coming out. पे गए और आपने ऐसे करके और पूरा सॉस चावल पे खोल दिया. अंडे का Coriander, okay, for Indian Chinese style. Spin move again. Hiya. Enough. ये है मोस्ट डिफिकल्ट क्योंकि आपको सॉस को अंडे में बैठाना है. डालो और सॉस के ऊपर थोड़ा चावल डालो. This guy obsessed with sesame seed. Uncle Roger think it actually look good. Just serve this simple version. Fried rice and curry on side. It's easy and everything stay hot. Gonna be more satisfying to eat. Overall, all version actually pretty good. Indian Chinese food very interesting to Uncle Roger because it like fusion of Chinese and Indian ingredient coming together. Uncle Roger hope I can go visit India again to try this. Oh, but no uncle title for Chef Ranveer because he talked too much shit about MSG. Hiya. Niece and nephew, Uncle Roger been to India before for my stand-up tour, so click here to watch little snippet of my show when Uncle Roger in Delhi. Go click.